Now, this is in regarding with the Hisar court giving out its order on the death of a child and women in last year when the protest broke out. What we are getting to know that the self-styled godman Rampal has been held guilty in both cases. Now, this is the verdict that has been passed by the Hisar court. He was charged with murder and creating a riot-like situation where you had almost more than 50 people who were injured. And as precautionary measures, all the trains and the traffic to Hisar that was stopped to maintain law and order. So an important judgment against self-styled godman Rampal, where Hisar court passed the verdict and held guilty in both cases. Let me straight away go across to Executive Editor Abhishek Kapoor on this. Abhishek, yes, please give us the details. How really does it impact the case where you have the self-styled godman being held guilty? All right, Piyush is also joining us at this point in time. Piyush, yes, give us the details. What really happened in the court? Yeah. Now I can hear you. Piyush, can you hear me? Can you just give us the details? What really happened in court? Well, absolutely, that's a big breaking coming in from Hisar Central Jail, where a special court was set up to pronounce the verdict in Sant Rampal case. Sant Rampal has been held guilty in both the FIR number 429/14 and 430/30. Remember, both these cases are of murder cases, and we are learning that Sant Rampal has been held guilty by the court here in Hisar. We are now joined by AP Singh, who is also lawyer of Sant Rampal. आज क्या हुआ सर कोर्ट में? आज जो हुआ, पहली बात तो एडवोकेट को मुझे ही अंदर नहीं जाने दिया गया। एक पक्षी कार्रवाई वहाँ की गई, किस तरह से की गई, क्या किया गया, क्या दबाव था, क्या प्रेशर था, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन सुनने में ये सब फैसला आ रहा है। सुनने में पता ने कंफर्म किया है सर कि वो Sant Rampal जो है इज नाउ हेल्ड गिल्टी इन बोथ द केसेस। नहीं, एडवोकेट को भी कंफर्म करना चाहिए। डिफेंस काउंसिल, एसपी साहब तो शुरू से ही सोच रहे हैं सब कुछ हो जाए, लेकिन डिफेंस काउंसिल ने जो मेहनत की है 14 से अब तक, उसको भी कंफर्म होना चाहिए था, मैं समझता हूं। और पूरी तरह से अगर हेल्ड गिल्टी किया, पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि जो फॉलोअर्स की वहां मौत हुई थी 429/14, 430/14, उसमें साफ तौर पे एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोलों की वजह से, दम घुटने की वजह से मौत हुई। तो उसके शिकायतकर्ता ने भी कहा, परिवार वालों ने भी कहा, गवाहों ने भी कोर्ट में कहा, और पूरी तरह से उसको नजरअंदाज करके अगर किया गया है तो, और जो 16-17 अक्टूबर को उसमें सजा पर ऐलान होगा, क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर, उसमें आगे हम उसको हाई कोर्ट ले जाएंगे। हमारे पास 2 कोर्ट हैं, और लंदन प्रोसेसर कोर्ट ने भी कहा था कि आपके पास 2 कोर्ट हैं ऊपर जाने के लिए। of the verdict, the quantum will be announced in a few days from now. Coming in from Hisar, where you have the self-styled godman Rampal being convicted in the 2 murder cases against him. Piyush, thanks very much for the moment. We slip into a short break. News and updates continue on the other side as well.